Hello everyone. So welcome back to Geology Simplified. So from the last video series on the GATE exam, अब हम फोकस शिफ्ट करते हैं GSI पे और एज द फुल नेम गोज कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। दैट इज़ एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में पता तो सबको रहता है, बट people usually ignore it or don't give enough attention to. That is the general English paper. So we'll discuss some past trends, pattern of the exam and a strategy which you can follow. So some details about the exam first. 4 पोस्ट निकलती हैं: जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट, केमिस्ट और जूनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, ग्रुप ए एंड ग्रेड ए। तो जिनको नहीं पता है, जीएसआई इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड सीजीडब्ल्यूबी इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। बोथ आर टोटली डिफरेंट रोल्स। तो एग्ज़ाम में अप्लाई करने से पहले यू शुड डू सम बैकग्राउंड स्टडी। ओके, then 2019 schedule as per the UPSC calendar. Notification is supposed to be coming out on 20th of March. Exam supposed to start from 28th of June and duration is generally 3 days. So scheme देखते हैं एग्ज़ाम की। One paper is common no matter which post you are applying for, that is general English, based on which this video is being made. Then for each of the 3 or 4 posts you have 3 papers, and if you are applying both for geologist and hydrogeologist, so you will need to take geology paper 1, 2, 3 and hydrogeology. Important thing to note is this general English paper, this is compulsory, so you cannot ignore. This is qualifying. That means you have to score minimum, according to last year the minimum qualifying marks was 20%. This may change as is given in the notification. So minimum 20% you have to score, otherwise you are out of the race. बाकी पेपर्स काउंट नहीं होंगे, फिर कोई मतलब नहीं है। ये पेपर 1, 2, 3 और हाइड्रोजियोलॉजी, वॉट एवर एल्स यू आर गिविंग, you have to score a minimum of 20. So you have everything to lose if you fail in this. बाकी सब खत्म. But you have much to gain because the marks for this paper is counted. So if you can score good in this, then you can make up or you can increase your chances for an interview call. Because अगर बाकी किसी पेपर में मार्क्स कम भी हो जाते हैं, if you get good enough marks in English, so your total marks will go up. So this paper is highly important, don't ignore it. Syllabus देखते हैं, because for every paper, if you are preparing sincerely, you should look at the syllabus first. So syllabus is 2 लाइन का syllabus है. Candidate will be required to write a short essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workman-like use of words. So the syllabus mostly doesn't give many things away here. क्वेश्चन ट्रेंड देखते हैं। एसे होगा 30 मार्क्स का, 800 वर्ड्स का एसे लिखना है। प्रेसी राइटिंग 30 मार्क्स, अराउंड 300 वर्ड्स you have to write. Then you have to write a paragraph on 1 phrase out of 5. This will be 10 marks, around 200 words you have to write in this paragraph. Then you have to use some words in sentences. 5 words will be there, 10 marks total. Then idioms or phrases you have to use again in sentences. 5 such phrases will be there, 10 marks. Then correcting sentences without changing their meaning. So 10 sentences will be given. You have to correct with them without changing their meaning. This again 10 marks. तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि 30, 30 and 10. So these 70% of the paper is based purely on your writing skills. That is how important that is. अगर 70 में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए तो बाकी कम भी आए तो चलेगा, बट वी विल ट्राई टू स्कोर गुड इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस। इंस्ट्रक्शंस जो कि हम लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स दिस अप्लाइज टू सम पीपल.
जिनकी अनफॉर्चुनेटली हैंड राइटिंग इज़ नॉट वेरी क्लियर, तो प्लीज़ ट्राई एंड मेक इट एटलीस्ट कीप इट क्लियर एंड लेजिबल, एटलीस्ट पढ़ने में ईजिली आ जाए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग here is concise answers, to write concise answers, to stick to the word limit. This is actually given in the actual question paper. This instruction has been taken from there, to stick to the word limit, which is generally given after the questions. Breaching the word limit may be penalized. तो ऐसा नहीं है कि लिखते ही जा रहे हैं तो फिर वर्ड लिमिट का कोई चिंता नहीं है. सो एटलीस्ट plan your essay or whatever essay you are writing according to the word limit. Then time division is very important. This is a suggestion. Divide your time among the questions. Suppose if you are starting with the essay पहले लिख रहे हो तो फिर then you can ideally maybe give some 50 minutes to essay, then another 50 minutes to précis, then another 60 minutes to the rest of these questions, because they require relatively lesser amount of time. Then maybe the remaining time for revision. Revision is recommended because then you will be able to rectify any grammatical errors or any blunders if you have made लिखते समय, but keep some time handy at the end. So moving on to the first question, essay writing. This carries 30 out of 100 marks. 800 words. You have to choose any one of the 5 topics. So we'll see some recurring themes over the past years. Governance has been very commonly asked. I think last year it was accountability, not mere stability is essential for good governance. You have to express your views on this. Or digital technology is the very hot topic of essay these days. Book versus ebooks, pros and cons of online education and examination. Social media, this thing has been asked like crazy. Social media credibility with objectivity and humanity. So also focus on the topic. Now social media का मतलब ये नहीं कि social media के बारे में जितना whatever you know under the sun you write there. You have to focus on the directive also. Credibility with objectivity and humanity. So focus on the keywords also. Objectivity, humanity, and how both these can give credibility to social media. So economy also, regular feature is there. Rural sector and Indian economy, very broad topic. Again you have to decide how you will fit this into 800 words. We'll see how. The family and globalization, and current events based topics are very common also. Rights of persons with disability. This was asked somewhere when the bill was being discussed. Sting operations in India, again some events or topics which are based on the current happenings. So we'll see strategy, a kind of a workflow, how you can go about essay writing. First is choose the topic wisely. That is, how will you choose it wisely? You will choose it based on the content you have already in mind for each. तो कुछ तो पता होगा टॉपिक्स के बारे में. आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स, वॉट एवर यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट विथ यू हैव टू चूज. वेरी कॉमन बट स्टिल इट हैज़ टू बी स्टेटेड, बिकॉज एक बार अगर टॉपिक गलत चूज़ कर लिया और उसको लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद चेंज करने में यू विल रियली स्पॉइल योर पेपर. सो चूज इट वाइजली. फिर डोंट स्टार्ट राइटिंग स्ट्रेट अवे. मतलब टॉपिक पेपर मिलते ही तुरंत लिखना मत शुरू कर देना. What I'd suggest is prepare an outline. और आउटलाइन वहाँ पे भी नहीं कि जहाँ पे ऐसे का टॉपिक है वहीं पे लिखना शुरू कर दिया. कहीं पीछे at the last page where you should keep a page for rough work, there you should prepare an outline once you have chosen the topic. Now outline again, अब ये स्कूल का ऐसे नहीं है कि you will just write an intro, body, conclusion. Outline can be based on certain approaches. There are many. I will mention some. First is the analysis approach. So any topic you have at hand, you can start with the historical background, then you can move on to the current context if it has been in news or some topics which were related. Then you can give some pros or cons, but depending on if the topic needs analysis, तो यहाँ पे pros और cons दे सकते हैं. then उसके बाद एक
बैलेंस सा आर्ग्यूमेंट दे के वे फॉरवर्ड बता सकते हैं कि आगे क्या होना चाहिए. और फॉर एनी टॉपिक यू कैन यूज़ द सिस्टम्स अप्रोच. सो सिस्टम्स अप्रोच में इट्स अ वेल ऐसे राइटिंग में अप्लाई कर सकते हैं. वेयर सिस्टम्स अप्रोच में कोई भी टॉपिक है तो यू जस्ट आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, मेंशन दम, ऐसे में लिखने की बात बता रहा हूँ. देन आइडेंटिफाई द रिलेशंस बिटवीन द among the stakeholders, and then identify the relationship between and among the stakeholders and outside with the environment. तो दिस इज एन अप्रोच. मतलब कि अगर कोई भी टॉपिक मिल गया तो यू कैन कैटेगराइज और एटलीस्ट गेट सम आइडिया कि कैसे शुरू करना है, कैसे बॉडी में क्या लिखना है. देन अगेन कंक्लूजन हाउ इट शुड बी. देन finally get to writing. Once you have finalized your outline, and in the outline also mention any just scribble any quotations or thoughts, catchphrases, keywords. अगर कुछ भी याद आ रहा है तो वही outline में you can write it right there in the rough work, and then again when you are writing the original essay, तब वहाँ से outline से refer करके you can just detail it out. मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जितना भी कुछ याद आ रहा है जस्ट मेंशन इट इन द आउटलाइन सो दैट यू डोंट फॉरगेट एज यू गो ऑन राइटिंग अबाउट द एसे. दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू मेंटेन कोहेजन और कंटिन्यूटी अमंग पैराग्राफ्स, बिकॉज अगर रैंडमली कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दिया तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन कंटिन्यूटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर कहीं भी कुछ भी लिख दिया तो वो ऐसे नहीं, फिर तो वो बस एक रैंडम सा राइटअप हो जाएगा. सो आई थिंक दीज आर वेरी जनरल आइडियाज ऑन ऐसे राइटिंग. अब इसके बारे में हम घंटों बात कर सकते हैं, बट करेंटली वी विल नॉट गो दैट डीप. मूविंग फॉरवर्ड टू प्रेसी राइटिंग. 30 मार्क्स होता है आउट ऑफ 100. 800 वर्ड्स का पैसेज रहेगा, उसमें से अराउंड 1/3 वर्ड्स में हमें एक प्रेसी लिखना है. नाउ व्हाट इज अ प्रेसी? प्रेसी इज अ कंसाइज समरी ऑफ एसेंशियल पॉइंट्स. पहले क्लियर रहना चाहिए कि प्रेसी होता क्या है. तो थीम्स अगेन पास्ट ईयर्स में जनरली ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड टॉपिक्स रहे हैं, एजुकेशन एंड इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बट अगर से सपोज इफ यू हैव साइंस बेस्ड टॉपिक देन यू विल बी लकी, एंड सपोज इफ यू गेट अ अर्थ साइंस बेस्ड टॉपिक और पैसेज यू आर इवन लकीयर. तो विल सी सम डूज एंड डोंट्स. तो पहले देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए. वाइल राइटिंग अ प्रेसी, डोंट जस्ट गिव एन आउटलाइन. इट्स नॉट एन आउटलाइन ऑफ अ पैसेज. डोंट जस्ट कंपाइल द इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. ऑफ कोर्स प्रेसी इज अ कंपाइलेशन, बट नॉट जस्ट वर्बेटिम वहाँ से उठा के यहाँ पे चिपकाना नहीं है. यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. अपना कोई पर्सनल ओपिनियन या फिर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करना है. वॉट एवर यू विल राइट, यू हैव टू बेस इट ऑन दिस पैसेज इटसेल्फ. यू डोंट हैव टू मेक एनी assumption और समथिंग. जो भी करना है वॉट एवर यू हैव टू जस्ट ब्रीफ दिस पैसेज. सो कमिंग टू द डूज, अगेन राइट इन योर ओन वर्ड्स. कैसे करेंगे? जस्ट कंप्रेस एंड पैराफ्रेज द ओरिजिनल सेंटेंसेस. This will come with practice. Write in third person. First person account नहीं होगा प्रेसी राइटिंग. A pressy is not a first person account. The original passage may be a first person account, wherein someone is telling you about an experience he or she had, but you are reporting it. So you will have to write it in third person. That is, it was experienced by him or something. You are narrating, so it will be in third person. Then again, if you want to follow a workflow, some steps are here. Read the text carefully. This is a given. पढ़ते you have to underline simultaneously. Underline the issue defining portion, something which are absolutely necessary to define the topic at hand. Identify key ideas as you read. Some ideas or some keywords. For every 2-3 sentences there will be some idea which they will be based upon. So write those ideas down on the paper itself if you can write. Then जो भी ideas और information अभी तक gather करी है या underline करा है, those
start writing in concise statements. Skip the unnecessary details because वैसे भी you have to compress 800 into 300 around 3 or 270 words, so you have to skip the unnecessary details. Just focus on the necessary portions which are issue defining, जिसके बिना issue will not be described very concisely. So यहाँ पे your really language skills will be at work, that how much you can be brief and concise and to the point about the statement, and then again maintain continuity among them. ठीक है. So avoid repetition of words, especially keywords. Try to keep some sentences, like I have told, that concise statements, make them continuous and just define the issue. So then dealing with the sentences, that is what rest of the questions are based upon. Paragraph writing on one of the 5 phrases, 10 marks का क्वेश्चन रहेगा. 200 words, around 200 words लिखना है. Now relatively common phrases दिए रहते हैं. सब for example एक बार आया था every cloud has a silver lining. तो out of 5 phrases एक ना एक तो आता रहेगा अच्छे से, जिसकी मीनिंग क्लियरली पता होगी. तो you can simply write the paragraph. 200 words का है तो you don't have to fret a lot about it. Just simple introduction, body, conclusion. It's not an essay, but just to frame a paragraph, you can just go about that way. Then next question, you have to use some words in sentences. 5 words will be there. Now these words are not very easy, to be frank. They are moderate to tough based on your vocabulary level, and they can be very tough. कभी सुना भी नहीं होगा, but if you have a decent vocabulary, then they will be relatively moderate. Something like largesse पूछा हुआ है, macabre, words like those, not very commonly used, but you have to keep that in mind. और vague sentences नहीं बनाने हैं. You should make some sentence which actually makes the meaning of the word clear. Then again 5 phrases you have to use in sentence. 2 marks के एक phrase का sentence रहेगा. That is 5 phrases, 10 marks, 2 marks each. जैसे don't blindly trust things you hear on the grapevine. So this is also an example, and this is also an advice. This says here on the grapevine was the phrase which was once asked. So it's a sentence based on that. Here on the grapevine means to learn about something through gossip or any informal means of communication. So gossip से जो भी कुछ सुना हो उसको इतना blindly trust नहीं करना चाहिए. So this is just an example of a phrase that was asked. I hope you will now अब ये याद रहेगा, at least ये वाला तो याद ही रहेगा. Here on the grapevine. Then you have to correct 10 sentences without changing their meaning. 1 mark each. This can get tricky if you don't get it straight away. अगर एक बार पढ़ने पे क्लियर नहीं हो रहा है कि आंसर क्या होना है, सही क्या करना है उसमें, तो मोस्ट प्रोबेबली आगे भी समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा. बट एनीवे यू कैन अटेम्प्ट. कोई नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है. सो एनीवे, एंड इफ योर फर्स्ट इम्प्रेशन सेज इट्स ऑलरेडी करेक्ट, इट प्रोबेबली इज, बिकॉज कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी रहेंगे जिसमें यू डोंट नीड टू मेक एनी करेक्शन. सो वॉच आउट फॉर दोज ऑल्सो. देन इसमें क्वेश्चंस जो सेंटेंसेस रहेंगे वो दे मे वेरी फ्रॉम सपोज कन्वर्टिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस और वर्ब का past tense, present tense. They will use past tense where you have to use present tense, something like that. So it is very wide. You have to practice a lot if you are weak at that. So we'll see what. If English is your Achilles heel, do not take this paper lightly, because trust us, इस पेपर की वजह से लोग GSI
एंट्रेंस से बाहर हुए हैं और काफ़ी लोग होते भी हैं. इवन इफ इंग्लिश इज स्ट्रॉन्ग, डू अटेम्प्ट दिस पेपर वेरी सीरियसली, बिकॉज यहाँ पे जितने मार्क्स पढ़ा लिए दैट इज़ एन एडवांटेज टू यू. बट अगेन अगर अच्छा, Achilles heel is, this is again a phrase, if you know it's good, if you don't know then it is a weakness among all your strengths. चाहे जितनी भी स्ट्रेंथ हो, जियोलॉजी इतना भी स्ट्रॉन्ग कर लिया हो, बट अगर इंग्लिश में फेल हो गया तो फिर फ़ायदा नहीं है. तो इफ़ इंग्लिश इज़ योर Achilles heel, do not take this paper rightly. Then what to do? Some golden rules. This is more orange, but anyway. So read. What will you read? As I told in some previous videos, read newspaper articles, editorials regularly, especially for the recurring issues, the current issues, because those will help you in essay also, or even in the Pressy, because those are mostly based on current issues. You need to have some knowledge on those issues, because without that you will not be having enough content for the essay. So if you can again develop a habit of reading the newspaper regularly, not the whole newspaper, at least the editorials, because there you will get the maximum amount of phrases, also facts, but then opinions, phrases, idioms also, analogies, whatnot, of course vocabulary also. So the Hindu or Indian Express, those are recommended, whatever suits you, whichever suits you. इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़ना पड़ेगा. देन राइट, प्रैक्टिस राइटिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स. अगर ऐसे वीक है या फिर कुछ भी प्रेसी राइटिंग वीक है या फिर वोकेबलरी या फिर whatever is your weakness, you practice it. Practice previous year papers. Maybe follow our strategy that we just discussed. Use these tips and at least एक दो पेपर तो लिखे लेना before the exam. Or if you are weak in essay, then practice lot of essays. Then if you अगर प्रेसी में confidence नहीं है तो फिर प्रेसी एक दो draft you can just practice it. So write. Don't just reading won't help, because as I told you, writing skills will define almost 70% of the paper. So once you have the knowledge or the content, you have to write it, express it in words, express them in words. Those are ideal examiner के लिए भी and for you also. Then if you are doing this, then you don't need to panic in the exam. Fikar not. If you have done this, if you have done the homework, so you will not find the paper too hard. Even if you get some hard topic, don't worry, just kiss. That is, keep it short and simple. Keep the sentences short and simple. Again, this will be helpful for you also as well as the examiner. They are not looking for your complex vocabulary, to be honest. If you express, हाँ थोड़ा बहुत चलता है, मतलब ठीक है, if you know it's fine, but use it wisely. If you know the words, use them appropriately. ऐसा show off नहीं लगना चाहिए. It should be very tasteful. So keeping it short and simple. In essay, in Pressy, everywhere this is a universal funda. Even in your any subjective exam answers also you can use this KISS principle. So thank you, that's all for this video. We hope you found it helpful. If you did, so also share it with others who might find it helpful. Again, अब जैसा बोला था, we can spend hours on each of this topic, essay, Pressy, what not, but not today. And also do let us know about any specific query. अगर कोई specific query है इन English paper से related तो ज़रूर बताएं comment section में. And also subscribe to our YouTube channel for more such content. See you later.